Hello students, so this is our third video in the series of multiple integrals. In this video we will learn how to evaluate triple integrals for both the cases. First, in which the limits are already given to us, and the second type of problem in which we have to calculate the limits by ourselves. Let's have a look at an example of first type, that you have to solve the triple integral over the region R. This is triple integral dx, dy, dz, where region R is defined as x, y, z. The limit of x is from 0 to 1, y goes from x square to x, and for z it's from 0 to xy. So this is the information given to us. Let's begin with the solution. Let us suppose this is the integral I, triple integral. Now if you recall, like I told you, this is the first integral, then second, and this is the third one. On the first integral we will put on the variable limits having maximum number of variables. On second integral we have again the limits which are having less number of variables, and then on the last we will have constant limits. If you see here, the x is having constant limits, y is having limit in one variable x, z is having limit in two variables x and y. So the order will go like this: 0 to xy, first it will be dz, then for y, x square to x, dy, in the last it will be like. So this is the actual framing of our integral. In the question they simply write solve triple integral dx, dy, dz over this r. So हमने क्या करा, हमने सेट करके लिखना है. कांस्टेंट लिमिट्स एंड में आएंगी, उसके बाद आएंगी वेरिएबल लिमिट्स, है ना. जो वेरिएबल लिमिट्स हैं जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, एंड देन फिर सेकंड पे, एंड देन in the last constant limits. Now the integration of dz is simply z. The limits are from 0 to xy. It's x square to x, 0 to 1, dy dx. So it's 0 to 1, x square to x, upper limit minus lower limit, xy minus 0, dy dx. It's 0 to 1, x square to x, simply xy dy dx. Now integration of y is y square by 2, so this is x into y square by 2, upper limit, lower limit, then integral with respect to x. I am going to take this 2 outside, 1 by 2, integration 0 to 1, upper limit minus lower limit. Now this is x square, take this x inside the bracket, x cube, this is x raised to power 4 and 1x is already present there, so power 5 dx. So this is 1 by 2 x raised to power 4 upon 4, integration now, x raised to power 5 will be x raised to power 6 by 6, 0 to 1. Now put on the upper limit minus lower limit, and 0 will simply give us 0. So this is 1 by 2 into 1 by 4 minus 1 by 6. So just you can take the LCM or you can simply cross multiply this. This is 6 minus 4 upon 2 into 24 na, 6 into 4. So 6 minus 4 is 2, that will get cancelled, so your answer is 1 by 24. So this is how we solve triple integral. The thing is, just you have to look for the pattern. आपको बस पैटर्न सही से फ्रेम कर लेना है कि कांस्टेंट लिमिट्स एंड में रखनी है, और जो लिमिट्स वेरिएबल में है उसमें जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं वो फर्स्ट इंटेग्रल पे, और जिसमें कम वेरिएबल्स हैं वो सेकंड पे. और अगर दोनों में वेरिएबल्स का काउंट सेम हो फिर वो आपके ऊपर, आप दोनों में से किसी भी ऑर्डर में उनको रख सकते हो, बट जो कांस्टेंट लिमिट्स है वो हमेशा एंड में रहेंगी. नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल.
in which the limits are not directly given to us. First we will structure out the limits and then we will solve the ट्रिपल इंटीग्रल. जैसे इसमें ये रीज़न आर हमें दे रखा था सिंपली लिमिट्स की फॉर्म में, वहाँ पे हम पहले लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरह से फ्रेम करेंगे हम आर को, फिर उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 2, we have to solve triple integral x plus y plus z plus 1 square dx dy dz over the region A, where A is defined to us as that A is the region bounded by x greater than 0, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0, x plus y plus z less than equals to 1. अब इसको याद भी रख लेना, ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेट्राहेड्रन. ये टेट्राहेड्रन की इक्वेशन होती है. जो जनरल फॉर्म होती है टेट्राहेड्रन की वो ये होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, तो ये इक्वेशन होती है टेट्राहेड्रन की, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे आपको लिमिट्स कैलकुलेट कैसे करनी है, जो आपको शेप दे रखी है आपने क्या करना है उसको लिख लेना है. जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक इक्वलिटी है नहीं है दैट डजंट मैटर, जिस तरह से भी आपको दे रखा है जस्ट राइट इट लाइक दैट. लिख लिया आपने. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स चूज़ एनी 2 ऑफ देम टू बी 0. अब कोई भी 2 को 0 चूज़ कर लो. जैसे मैंने x और y को 0 पुट करा यहाँ पे, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट. और ये हमें ऑलरेडी गिवन है दैट z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ सो व्हाट आई विल गेट 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1. तो मुझे z की लिमिट तो मिल गई है. अभी आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एंड नाउ फॉरगेट अबाउट z, कीप दैट असाइड. नाउ आउट ऑफ x एंड y choose any one of them 0 and put the equation number 1, put that in equation number 1 and you will get the limit of the opposite one. जैसे अगर आप यहाँ पे अभी सेकंड स्टेप में x को 0 लोगे तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालनी है. अगर आप y को 0 लेने वाले हो तो आपने x की वैल्यू को फिगर आउट करना है. सो मैंने यहाँ पे क्या करा, चूज़ करा x को 0, पुट x 0 इन नंबर 1, z को कुछ भी पुट नहीं करना है, z विल रिमेन लाइक दैट. So you will get from here, if I put x 0, y plus z less than equals to 1, which gives me y is less than equals to 1 minus z. अब आपके पास एक ये हो गया y greater than 0 and y is less than 1 minus z. Combining I got y lies between 0 and 1 minus z. अभी आपको क्या करना है, द थर्ड स्टेप. अब कौन बच गया, वी आर लेफ्ट विद x ना. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन बाय पुटिंग नन ऑफ देम 0. फर्स्ट 2 ऑफ देम 0, 1 ऑफ देम 0, देन नन ऑफ देम 0. सिंपली कैलकुलेट x फ्रॉम हियर, यू विल गेट 1 minus y minus z, and already x is greater than 0, so combining both we got 0 less than equals to x less than equals to 1 minus z. So the integral I will be now triple integral x plus y plus z plus 1 whole square. This was the function. Now put on the limits carefully. On this first integral I will put the limit of that variable which contains maximum number of variables. See, these are constant limits, limits in one variable, limits in two variables na, y and z. So first it will be for x 0 to 1 minus z, so I will write dx here. Then it will be 0 to 1 minus z dy, then in the last 0 to 1 dz. Now the task is to solve this integration. For limit part we are done na. For this solving this integration, remember this result of integration, which is integration of ax plus b raised to power n dx. This is ax plus b raised to power n plus 1 upon n plus 1 into a.
So this is what I am going to use here. See, the integration is with respect to x. It means for that time y, z and 1 they all are constant. So it looks like this now. 1 plus y plus z plus x raised to power 2. So what will be its integration? This looks like this na. This is the value of b. This is your x with coefficient 1. So the integration will be, integration क्या आ जाएगी हमारे पास, x plus y plus z plus 1 raised to power 3 n plus 1 na, upon 3. Then the limits 0 to 1 minus 5 minus z dy dz, and outside the limits go like that way. ना ये सारा कांस्टेंट है, all these are constant, y plus z plus 1. We are integrating with respect to x. So add 1 in the power, divide by same number. Now put on the limits, upper limit minus lower limit, and I am going to extract this 3 outside. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बाहर. Now put the upper limit here. In place of x you have to put 1 minus y minus z. Now if you are going to put here 1 minus y minus z, then y and z will get cancelled out. You are left with only 1 plus 1, that is 2 raised to power 3 minus lower limit, that is 0. In place of x put 0 now. If you put 0, what is left here? Y plus z plus 1 cube along with dy and dz. So this is 1 by 3, 0 to 1, 0 to 1 minus z, 8 minus y plus z plus 1 cube dy and then dz, right? Now this is 1 by 3, 0 to 1. Integration is with respect to y. Integration of 8 will be 8y minus, again here we will use the power rule because we are integrating with respect to y, and for that time this z and 1 both are constant. So this will be y plus z plus 1 raised to power 4 upon 4, 0 to 1 minus z dz. So this is 1 by 3, integration 0 to 1, upper limit 8 into 1 minus z minus, put upper limit here. When you are going to put 1 minus z in place of y, z will get cancelled and 1 plus 1 will give you 2 raised to power 4. Then put upper limit. For upper limit we are done. Put lower limit. In place of y put 0. You will get 0. Because of negative sign of lower limit and one negative which is already present there, it will become positive. In place of y you will put 0. So it's simply z plus 1 raised to power 4 upon 4, and it is now dz here. So this is 1 by 3. Let's simplify this before integrating 0 to 1. 8 into 1 minus z minus, this is 2 raised to power 4 upon 4. So it's simply 4 na, because 2 square 4 will get cancelled out and we are left with only 2 square, plus z plus 1 raised to power 4 upon 4 and dz. If you open this bracket, what you will get here? 8 minus 8z in this negative of 4 na, and 8 minus 4 will give us 4. So this is 1 by 3, 0 to 1, 4 minus 8z plus z plus 1 upon power 4 and upon 4 dz. Integrate with respect to z now. 1 by 3, it's 4z, 8z square by 2. Again the power rule, z plus 1 raised to power 5 upon 5 into 420, 0 to 1. Put on the upper limit, 4 minus 8 by 2 plus 1 plus 1, 2 raised to power 5 upon 20. When you are going to put the lower limit, this will become 0, that will also 0. Here 0 plus 1 is 1, so minus
1 by 20. So this is 4 and 4 is getting cancelled out here. From here I will take 1 by 20 common. 2 raised to power 5 minus 1. This is 1 by 60. These two. And 2 raised to power 5 is 32 minus 1. 31 by 60. This is your answer. So this is how we solve double integral when the limits are not given to us directly. And remember one thing, जब हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करा ना, अभी आपने देखा कि जैसे देखो आपके पास इस तरह से, लेट्स से इट वाज लाइक दिस ना, x प्लस वाई रेज टू पावर 2 dx. अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या करा कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन है तो पावर रूल लगाना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा. यू विल गेट लाइक दिस. बट रिमेंबर इफ़ द सेम प्रॉब्लम इज़ लाइक दिस देन यू कांट अप्लाई द सेम रूल हियर. अब यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है. द रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू हैव समथिंग लाइक ax प्लस बी रेज टू पावर n. और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या लीनियर फंक्शन है. दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन ना, ax प्लस बी कि लीनियर होना चाहिए, अंदर x की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ओनली 1. बाहर जो फिर पावर n है यू कैन रेज दैट पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाई सेम नंबर. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक हो गई, दिस इज नॉट लीनियर, सो यू कांट अप्लाई द पावर रूल हियर. Here the power of x is 1, this was constant, so this is a linear form. Now you can apply the power rule. इस स्टेप का थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. So this was all about triple integrals. Now in the next video we will see how to solve double and triple integral by changing the variables. Thank you.